हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. It's a video here with the word sir, and this is the second video. I made a video before and that was part 1 using that word sir. To sir chakrana, to feel giddy, means when you don't feel comfortable because of heat or something. We use that word sir chakrana, feel giddy. Don't go out in scorching sun. You may feel giddy. बाहर मत जाओ, सिर चकरा जाएगा। गर्मी में बाहर सिर चढ़ाना, तो टू गिव अनड्यू लिबर्टी, जैसे हम बोलते तुमने अपने बच्चे को सिर चढ़ा रखा है ना। तो यू हैव गिवन अनड्यू लिबर्टी to your son. सिर झुकाना, किसी का सिर झुकाना। He has brought down many a mighty head. तो बहुत बड़े बड़े सूरमा ताकतवर लोगों का सिर झुका दिया उसने। He has brought down many a mighty head. शर्म से सिर झुकाना, तो सिंपल टू हैंग हेड इन शेम। उसका सिर शर्म से झुक गया। तो his head was hung in shame. सिर झुकाना, तो किसी की रिस्पेक्ट में सिर झुकाना। टू बो डाउन इन reverence. सिर पटकना मतलब बहुत कोशिश करना लेकिन काम नहीं होना। तो टू मेक frantic efforts. I made or she made or he made frantic efforts to come out of the problem. परीक्षा सिर पर होना, the examination is inescapably close. इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। So if you think it's a good video for you, please share it for others and like it. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So if you think you want to learn English with me, you may contact me. Thanks for watching that video. Thank you.